Decent pace when he's completely warmed up. He'll be around about the 140 kilometre mark. Saw him bowling some balls in warm-up. He was really getting at the hoop and swing. Oh, this time Nichols underway with a boundary. No swinging going on there though. There was that of Nichols' bat, very nice. Henry Nichols. Mighty leave. Just the second time today that India have been bowled out for under 100 one-day internationals. They've played 960 of them. 7 times now been bowled out for less than 100. Third time batting first. I mean, everyone, no matter what the conditions are, everyone has a bad day as a batsman. You only just combine a few of them and you're in trouble. No ball, so we will have a free hit for Nichols. That's not what Khalil Ahmed is looking for early in his spell. Oh dear. This is where I'm just not in agreement with the laws of the game. Third umpire's job now is to just radio straight back out to the middle, say not a no ball, get on with the game, not a free hit. Yeah, I'm with you there, Simon. Bring up 4. Couple of bounces and rolls into the boundary over extra cover. Yeah, good. And it wasn't particularly good delivery. It was pretty much in the slot if a guy's got a free hit. Nichols didn't even really have to make much room for himself to be able to free the arms. But if you're a batsman and you're out and it's reviewed, they even look to check whether it was a fair ball and it seemed to be a no ball, then it gets overruled, doesn't it? It should work both ways. Yeah, 100%. It's one of the little things that's not quite right. That situation, 2 overs gone, 23 for 1. Daddy, story time. Flu time पे no story time. छूना मत, flu हो जाएगा. ये शील्ड मुझे फ्लू जर्म से बचाएगा. फ्लू जर्म्स छूने से भी फैलते हैं. नया लाइफ बॉय सिल्वर शील्ड फॉर्मूला दे बीमारी वाले कीटाणुओं से सुरक्षा. ससुराल गेंदा फूल स्मेल. इस मोबाइल से आप लोगों से दूर हो जाते और इस मोबाइल से लोग आपके पास आ जाते हैं. पॉप का छोटा मोबाइल पैक, जब भी चाहो परफ्यूम से नजदीकियां बढ़ा लो. Lovely. Tough day for the skipper. 3-0. India already winning the series. 5-match series, of course, for Kohli. Taking a well-earned break. Rohit Sharma taking over. He might pinch 2 here, Williamson. He will. Oh, that's poor from Ambati Raidu. Didn't chase it at all. It'll be this sort of thing that will disappoint Rohit Sharma, not
the fact that it's been a bad day, but the lackadaisical nature of the way that Raidu went after the ball. You have days where you lose, but as long as you are 100% all the way through, then you just move on. There is more bounce in this surface than there has been in the others, and it's quite steep. And I think Williamson needs to be a little bit careful with that back foot drive, especially early on, until he gets a feel for the height of the bounce, especially with 3 slips there, because it will be the extra bounce that will find the edge, not sideways movement. Well, both would do it, actually. But a ball that bounces, often the slight adjustment takes place, leads to an edge. Yeah, people will be sitting back thinking, well, Kane Williamson's obviously seen a lot of Bhuvanesh Kumar. They play at the same franchise in the IPL, but the simple facts of the IPL are generally that they don't train an enormous amount, particularly during the tournament, because the schedules are so busy, so much travel involved, that they don't actually have a lot of net sessions while the tournament's on. There'll be a good 8 to 10 days leading up to the tournament for the most part. During the tournament, there wouldn't be a lot of opportunity, I don't imagine, for Bhuvanesh Kumar to be bowling at Kane Williamson. Lovely finish. No edge though. 25 for 1 after 3. अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ, और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ पूछ। और सूरज भाई, आपको तो निमंत्रण मिल ही चुका है। चलो चलता। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। Their turn to get something back today, get something out of the series that's already gone. He's looked solid on defence as Williamson, just this one going past the outside edge. The Indian slip caught in, were excited for a moment. That has not missed by much, and oh, nice from Williamson. Got up on his toes, pierced the gap. Now, I mentioned he needs to be a little bit careful because of the extra bounce in the surface, but he just climbed over the top of it, didn't he? Got up higher. Okay, he gets off both feet there. Make sure that he can climb up over top of the bounce. just that delivery so late, doesn't he? That's what enables him to keep it down and be in total control, not forcing the issue, using the pace of the bowler. Change the angle up to Khalil.
Yeah, he's just rehearsing that, Henry Nichols. Just twisted the bat in the hand a little bit, and that's why he picked out that off. Need to get that bottom hand through, keep the blade open. He had 4. It's lost a little bit, though, isn't it, in the carnage of this Indian innings, and that is that Henry Nichols has taken over from Colin Munro at the top, and this is an opportunity, a dress rehearsal of sorts to see if he can perform this role at the World Cup. 31 for 1. लड़की है, चोट लगेगी रोने लगेगी। मेरे रोने की फिक्र है या अपने हारने की? जो अंदर की शक्ति आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। बिल्कुल दूध की तरह कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ नेचुरल कैल्शियम बढ़ाता है, जो आपके दांतों को बनाता है अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। पीको टर्मरिक इन ऑयल बेस विद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट। सूखी त्वचा का पोषण कर उसे कोमल बनाए। अब ना इचिंग न रैशेस। नए पीको टर्मरिक बेस। यहाँ तो हर तरफ जॉन डियर ही नजर आ रहा है, पर पार्ट्स वैसे तो जॉन डियर के पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकई चिंता मुक्त। जॉन डियर, सुविधा हर कदम, दाम फिर भी कम। Nice swing from Bhuvaneshwar Kumar. Lovely scene. Yeah, that was perfect. I don't think for a swing bowler you could release it any better than that. Oh, Williamson disappointed. You can hear it in his voice. Is that something Simon while still maintaining the gains in pace? I actually think for Bhuvaneshwar Kumar, he's a far better bowler now because it doesn't swing as much and it doesn't swing from the hand. So with that gain and probably about, on average, probably about 7 to 8 kilometres quicker than he was 3 years ago, I'm thinking, Scotty, it actually, he bowls it. He really bowls it down a line and then it swings late. And therefore, it makes him a lot more dangerous with both away swing and in swing. Is that action? It's really nice action. Uses every bit of height that he's got. It's a good back foot punch from Williamson. Bring about 3, possibly 4. It will be 4. Just a little. Nothing dramatically wrong with the delivery. एक पार्ले मैजिक्स देना। ये मैजिक्स नहीं है। ये भी बढ़िया है। क्रीम सिर्फ 15 रुपए का रिफिल बनाए पूरी बॉटल। जॉन्स का डर क्यों बनता है? Oh, a couple that managed a 15k decrease. But you're right, that one thing that can happen as well, though, in the modern day, in the modern era, I think the training and the knowledge around actions and bowling quicker and strength and conditioning and those sorts of things, you do get stronger in and around international teams because of the way that teams train, the way that the strength and conditioning coaches work on you. So I think you can get stronger or could make you quicker. Pulled again. That one is a couple of bounces into the boundary for 4. Just a little bit in between. Khalil Ahmed not short enough, not full enough. I'll tell you, I can think of one of New Zealand's greatest. And Shane Bond, who wasn't going to be a medium pacer any longer. Went away to the police training college, I think, and he
got stronger. He had a couple of years out of the game. Yeah, he did, and that's partly the reason I think he gave the body a chance to rest and get stronger, and then he was able to come back. Disingenuous to say he was medium pace as well. He was still 135, 140. He just wasn't the elite 150 pace until he came back from that 2 years of working as a policeman. And then didn't things change? Changed for the better. Only issue was, I think he always knew he had back issues. They were always there, but just decided every day he was on the park, he just wanted to bowl at 150 if he could. And boy, did he put some spells together for New Zealand. But didn't want to be a copper any longer. Good finish, 39 for 1. इस मोबाइल को कोई चुरा सकता है और इस मोबाइल से आप किसी का दिल चुरा सकते हैं। फॉग का छोटा मोबाइल पैक, जब भी चाहो परफ्यूम से दिल चुरा लो। अरे रितु की शादी है, चल ये सफेद बाल देख। जाने का मन नहीं कर रहा। ये 2 सफेद बालों से रुकना नहीं, ओके? गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर, इसमें है एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। मेरे देश की धरती संग बीकेटी उगले हीरे मोती। बीकेटी टायर देश की धरती से जुड़ा। 40 ओवर में 54 रन। उनतालीस पर 1 न्यूजीलैंड का स्कोर। 13 पर है निकल्स, 11 पर विलियमसन। एकमात्र विकेट जो गिरा है न्यूजीलैंड का वो है गप्टिल, जिन्होंने की पहली 3 गेंदों में न्यूजीलैंड की पारी के 14 रन बनाए। पहली ही गेंद पर छक्का, उसके बाद 2 चौके और उसके बाद अपनी उस आकर्षक पारी को समेटते हुए चौथी गेंद में एक अच्छी गेंद पर आउट हुए, 14 रन बनाकर लौटे। और बहुत ही शानदार गेंद और उसका बहुत अच्छा नतीजा, विकेट मिलता हुआ भारत को। विलियमसन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद से छेड़छाड़ करते हुए और दूसरी कामयाबी भारत की। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे न्यूजीलैंड के कप्तान को आउट करना, भुवनेश्वर कुमार दूसरा विकेट लेते हुए इस मैच का। और क्या गेंद थी। 39 पर 2 विलियमसन बाहर जाएंगे 11 बनाकर। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग हमारे बढ़ते परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तभी तो हम हैं द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं और एक और घातक हर तरह का प्रेशर आता है। वैसे क्रिकेट के मैदान में वो प्रेशर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। और क्रिकेट है, भले ही लो स्कोर है, कुछ भी हो सकता है। भारत के 3 विकेट गिरे थे 33 के योग पर, एक के बाद एक रायडू, कार्तिक और शुभमन गिल, जब भारत का स्कोर 33 था। और कहाँ 33 पर 2 थे, कहाँ 33 पर 5 हो गए। और बहुत बढ़िया गेंद नए बल्लेबाज के लिए, अंदर आती हुई गेंद। बल्लेबाज उम्मीद करता है कि एक अच्छी आउट स्विंगर मिलेगी, ऑफ स्टंप के बाहर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्विंगर से टेस्ट करते हुए और विलियमसन को अच्छा पकड़ा था वहाँ पर भुवनेश्वर ने।
लेग कटर था और जब भी ऐसा मूवमेंट होता है अच्छे बल्लेबाज भी दो सोच में रह जाते हैं, उस दोहरी सोच में कभी कभी विकेट गंवा बैठते हैं। ओह अंदर शार्प आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऊपर लगा है बॉल। वो तीखे हो गए एकदम से भुवनेश्वर कुमार। पहले 3 मैचेस में शमी ने लीड लिया हुआ था। भुवनेश्वर बहुत ही तीखा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर वरिष्ठ गेंदबाज हैं और उसकी भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। देखिए क्या बढ़िया कटर था और जी हाँ थाई पर लगा और ऊंची थी गेंद। शायद इसी वजह से अंपायर का निर्णय की नॉट आउट अन्यथा मुश्किल हो सकती थी यहाँ पर टेलर की। फिनिशिंग मूवमेंट हमने अभी देखा संजय साइड कैमरा से कि आगे आके खेलते हैं और ये इम्पैक्ट देखिए, जाहिर तौर से विकेट के ऊपर जा रहा था गेंद, लेकिन परेशान करने में कामयाब हुए हैं भुवनेश्वर कुमार। रॉस टेलर फ्रंट फुट के बड़ा चाह रखते हैं फ्रंट फुट पे आके खेलने का। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे यहाँ इस हिलती हुई डिलीवरीज को। विकेट मेडन जा रहा है अभी तक तो भुवनेश्वर कुमार का, और विकेट मेडन ही रहेगा 39 पर 2 ओवर के बाद। देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, देखो टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए हल्दी क्रीम के साथ। मेहनत ज्यादा, मैल और बदबू भी, लेकिन तनख्वाह इतनी महंगाई में आदमी अकेले घर कैसे चलाए? अकेले दोनों हाथों से आसान होगा ना? वैसे ही दोनों कमाएंगे तो घर चलाना भी आसान होगा ना। मैं काम शुरू करूं यूनिफॉर्म सिलाई का। व्हील 2 in 1, कपड़े फ्रेश, सोच भी। यहाँ तो हर तरफ जॉन डियर ही नजर आ रहा है। पर पार्ट्स वैसे तो जॉन डियर के पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकई चिंता मुक्त। जॉन डियर, सुविधा हर कदम, दाम फिर भी कम। 7 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए सिर्फ 54 रन और चाहिए। भारत ने 92 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए और वो 92 की ओर तक पहुंचा था। 9वीं विकेट के लिए जो भागीदारी हुई चहल और कुलदीप यादव के बीच में, और यहाँ हार्दिक पांड्या अच्छी शुरुआत करते हुए। बहुत सारे सवाल पूछ लिए उस पहली ही गेंद में हार्दिक ने। हाउ वाज दैट? उसके बाद क्या बॉल बाहर जा रहा था? ओह चहल साहब, अंपायर को कहीं ये तो नहीं बता रहे कि क्या करना चाहिए था उन्हें? अंपायर को के साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्लोज निर्णय चाहते हैं क्योंकि चहल बहुत जल्दी आएंगे गेंदबाजी के लिए। हार्दिक पांड्या पे सिर्फ इतना सा एक मैं ये कहूंगा कि एक लाइन कहना चाहूंगा। हर इंसान से जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती होती है और एक इंसान पर निर्भर करता संजय कि वो जो पत्थर उस पे फेंके जा रहे हैं, क्या आप उसको प्रहार जो आ रहा है आपकी तरफ वो सहते हैं या उन्हीं को इमारत बना के आप आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या भी कुछ ऐसे भारतीय टीम ने सोचा कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं ऑलराउंडर, भारतीय क्रिकेट टीम को उनकी उपस्थिति ग्राउंड में बहुत जरूरी, इसलिए वापस न्यूजीलैंड गए। पिछले मैच में उन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया, आज भी अच्छा खेल रहे थे और वन चेंज बॉलर आज बने तो हैं, लेकिन भारत को वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जो तलाश है वो अभी भी इनमें दिखती है। क्या उम्मीद करता हूं कि जो सबक बोर्ड चाहता था हार्दिक ने वो सबक सीख लिया होगा। कम उम्र के खिलाड़ी हैं, गलती की सजा मिली और ये देखिए फ्लिक, क्या शानदार फ्लिक और 6 रन, फ्लैट 6 एकदम। छोटी बाउंड्री है उस तरफ, सिर्फ 55 मीटर की बाउंड्री। और देखिए अब गलती की बात कर रहे थे तो कोचेस कहते हैं कि लेग स्टंप पे मत गिरिए, गलती है, गलती की। और यहाँ हेनरी निकल्स का टाइमिंग बहुत अच्छा। ओह, मुझे तो 6 ही लग रहा है। अंपायर का निर्णय अभी तक तो चाहिए। जी हाँ, गिरते हैं शहसवारी जंगे मैदान में, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले। तो जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं, रास्ते में आपको परेशानियां मिलती हैं, आप गिरते हैं, संभलते हैं,
लोगों के ताने सहते हैं, सब कुछ है, वो सब यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जीतता वही है जिसकी नजरें मंजिल पर टिकी रहती हैं, अपने काम पर जो फोकस्ड रहता है। तो स्लिप ली हुई है रोहित शर्मा, अच्छी आक्रामक फील्ड सेटिंग है। जरा सी भी गलती हो, क्योंकि उनके पास स्कोर नहीं है बचाने के लिए बहुत बड़ा। अगर भारत को ये मैच जीतना है तो सिर्फ एक ही तरीके से जीता जा सकता है कि 92 से पहले न्यूजीलैंड को आउट करें। जी हाँ, ऑल आउट करने का ही एक माध्यम है संजय। इस मैच को अगर जीतना है, सुन के थोड़ा अबाक हो रहे होंगे हमारे कुछ दर्शक कि क्या ये मैच जीता जा सकता है। मैं कहूंगा कि अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। क्रिकेट का खेल है, जिंदगी का खेल है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल 45 पर 2। एक पार्ले मैजिक्स देना। ये मैजिक्स नहीं है, ये भी बढ़िया है। बच्चों को परेशान करना गलत बात है। चॉकलेट, ऑरेंज, लाइची, लेमन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, इतने सारे फ्लेवर्स हैं कहीं और? नहीं। कोई भी क्रीम बिस्किट मैजिक्स की जगह चिपकाओगे? सॉरी, अब से सिर्फ पार्ले मैजिक्स। बच्चे को पता है, क्रीम बिस्किट का सुपर हीरो सिर्फ पार्ले मैजिक्स। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिले प्राकृतिक निखार। अब गोदरेज नंबर 1 के 100 ग्राम के 4 साबुन सिर्फ 60 रुपए में। ओ तेरी मेरे देश की धरती संग विकेटी उगले हीरे मोती। मेरे विकेटी टायर देश की धरती से जुड़ा। Yeah, he bowled exceptionally well. I think everyone did a great job with the ball and was quite a close one. It has been a tough series against India, but a different side out this stage. Yeah, I guess this series has been disappointing. We haven't sort of shown our best throughout, and today it's nice to, I guess, show what we are capable of when we do get it right. And that we knew India were going to be a tough side, and yeah, they've outplayed us. न्यूजीलैंड 47 पर 2, 8.2 ओवर के बाद। They're a world-class side, and we're going to top our game again in a different format. So something to look forward to, and the guys are excited about that as well. Both teams are double. भुवनेश्वर ने अच्छी शुरुआत दिलवाई जरूर है भारत को, लेकिन लक्ष्य इतना छोटा है कि जब तक 3-4 विकेटें एक साथ ना गिरे तब तक भारत की संभावनाओं मुश्किल ही कहा जा सकता है। और यहाँ पर टेलर इस बार उठाकर खेलते हुए लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर। देखिए, गेंद को रोकने के लिए आए थे भुवनेश्वर के सामने, लेकिन खुद मिस कर गए। न्यूजीलैंड का 49 पर 2 जीतने के लिए अब सिर्फ 44 रन चाहिए। थोड़ी सकारात्मक अप्रोच यहाँ पे डालना चाहूंगा। भारत को जीतने के लिए 8 विकेट चाहिए। हैमिल्टन मुकाबला हो रहा है और तीसरा जो T20 खेला जाएगा वो भी इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा संजय। और उसके बाद भारतीय टीम रवाना हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए न्यूजीलैंड से। फिलहाल इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे न्यूजीलैंड के 2 विकेट के नुकसान पर। काफी जल्दी बने हैं 50 रन। 8.4 ओवर में सिर्फ 52 गेंदों में 50 रन बने हैं। ठीक औसत से रन बना रहे हैं, तो उस हिसाब से 16-17 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है कि जो मध्यांतर है, मध्यांतर अब से थोड़ी देर में लगभग 25 मिनट बाद होना शेड्यूल्ड है। तो अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित तौर पर शायद अंपायर थोड़ा बढ़ा देंगे खेल को। टीम सऊदी वहां पे कुछ अपने विचार व्यक्त करते हुए जिस एकादश में शामिल नहीं है। पर फास्ट बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड का वही
जाना जाता है उनके स्पिनर से ज्यादा। डैनियल विटोरी एक ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने अपना नाम काफी रोशन किया स्पिनर्स की दुनिया में न्यूजीलैंड के लिए। और इस समय ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं T20 का शेड्यूल, वेलिंगटन पे पहला, हैमिल्टन पे तीसरा, और ये वही वेन्यू है जहां पे भारत अपने इस दौरे का आखिरी मैच खेलेगा T20 का न्यूजीलैंड के खिलाफ। सटीक लाइन के साथ 9वें ओवर की समाप्ति 50 पर 2 न्यूजीलैंड। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिले प्राकृतिक निखार। अब गोदरेज नंबर 1 के 100 ग्राम के 4 साबुन सिर्फ 60 रुपए में। ओ तेरी निखार। मेहनत ज्यादा, मैल और बदबू भी, लेकिन तनख्वाह। इतनी महंगाई में आदमी अकेले घर कैसे चले? अकेले सदन का रुख चलाना भी आसान होगा ना। मैं काम शुरू करूं? यूनिफॉर्म सिलाई का व्हील 2 in 1, कपड़े फ्रेश, सोच भी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर अब सिर्फ 25 रुपए में। अब बालों में रहे रिच शाइन और रिच कलर। हार्दिक पांड्या यहाँ पे अटैक अपना जारी रखेंगे, दूसरा ओवर फेंकेंगे इस मैच का। न्यूजीलैंड की टीम इस समय बहुत ही आसान परिस्थिति पे अपने आप को फील कर रही होगी, लेकिन बहुत सीरियसनेस दिखाई है और ये सिंगल उसका एक प्रमाण है। रॉस टेलर का वहां सिंगल लेना कैजुअल नहीं होना। संजय, जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल ने शुरुआत की थी, मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा कैजुअल थे, कॉन्सेंट्रेट उतना नहीं कर रहे थे जितना करना चाहिए। आते ही एकदम से प्रहार शुरू कर दिया और अपनी विकेट भी गंवा बैठे। यहाँ बल्लेबाज ऐसे में दो राहें पर होता है। एक जगह उसको लगता है कि पिछले कुछ मैचेस में कामयाब नहीं हुआ हूँ, प्रेशर नहीं है, अगर आउट भी हो जाऊं तो पीछे बैटिंग है तो थोड़े हाथ खोले जाएं। हाथ खोले और इस बार ये अपील जोरदार, लेकिन नाइजल लॉन्ग ने हिलाया। हालांकि आवाज ऐसा लगा आई पैड से लगा था। रिव्यू लेंगे। स्टंपाई के सुन पा रहे हैं हम भी। कार्तिक ने कहा आवाज तो आया था, लेकिन सिर्फ आवाज ही नहीं, मुझे लगता है कि नाइजल लॉन्ग और चहल की दोस्ती बहुत हो गई है। एक बार फिर से देखें, आवाज जरूर आई थी, डिफ्लेक्शन भी था, और ये है हॉटस्पॉट। वो देखिए पैड पर सफेद रंग का जो निशान लग रहा है, कोई शंका नहीं कि पैड पर लगी थी। हार्दिक का यहाँ पर ये कंधे उचकाना। उनसे पूछा रोहित शर्मा ने कि आपको क्या लगता है, आप सामने से देख रहे थे। जी हाँ, भारत तीसरा विकेट तलाश कर रहा है। यहाँ पे हेनरी निकल्स आज ओपन करने आए मार्टिन गप्टिल के साथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो अपना एक मार्क, अपना निशान न्यूजीलैंड की टीम में किसी न किसी रूप में छोड़ना चाहते हैं। मिडिल ऑर्डर से आज उनको प्रमोट किया गया ऊपर। हालांकि मिडिल ऑर्डर में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी भारत के खिलाफ, लेकिन एक विश्वास न्यूजीलैंड की टीम को कि कॉलिन मनरो को ड्रॉप कीजिए और हेनरी निकल्स को ऊपर लेकर आइए सलामी बल्लेबाज के रूप में। बहुत बड़ा निर्णय लिया होगा चयनकर्ताओं ने कॉलिन मनरो को बाहर बिठाने का। मनीष, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ रोहित शर्मा ने 3-3 स्लिप्स ली हुई हैं, लेकिन जो लाइन हार्दिक पांड्या बोल कर रहे हैं वो स्लिप्स का फायदा उनको मिल नहीं पाएगा, बिकॉज वो मिडल और लेग स्टंप की गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार, जबकि उन्हें मिडल और ऑफ स्टंप। आप देखिए जैसे ही उस कॉरिडोर में गेंदबाजी की, बल्लेबाज परेशान, दबाव है बल्लेबाज पर। 3-3 स्लिप्स हैं, जानते हैं जरा सी गलती हुई तो पेविलियन की राह पकड़नी पड़ेगी, और उस कॉरिडोर में एक बार फिर से परेशान करते हुए पांड्या। भारत के लिए 11वां और 12वां ओवर बड़ा ही घातक साबित हुआ था, जब रायडू, कार्तिक 11वें ओवर में और 12वें ओवर के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल आउट हुए थे। ऐसे ही 2 ओवर भारत को चाहिए यहाँ की 2 ओवर में
3-4 विकेट गिरे तब कुछ बात बन सकती है। 10 ओवर के बाद 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड। बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। बिना गैस वाला फॉग ये जल्दी से उड़ेगा नहीं, रहेगा। दादी स्टोरी टाइम। फ्लू टाइम पे नो स्टोरी टाइम। छूना मत, फ्लू हो जाएगा। ये शील्ड मुझे फ्लू जर्म से बचाएगा। फ्लू जर्म्स छूने से भी फैलते हैं। नया लाइफ बॉय सिल्वर शील्ड फॉर्मूला दे बीमारी वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। वीको नारायणी जेल, जिसमें 16 जड़ी बूटियां समाये, दर्द के जड़ तक जाए, लंबा आराम दिलाए। वीको नारायणी जेल, जड़ तक जाए, लंबा आराम दिलाए। होता है। Gift to Ross Taylor from the outset. It's probably the newer ball. Not quite able to grip it. Might have slipped from his hand, but it is a generous full toss, and that too on the pads. It's being dispatched. He certainly hasn't bowled many of these in the series. Indra Chahal has been extremely effective. Often started to slide, especially those first ODIs. Spin bowlers. I think he's been outstanding in the field as well. We actually got Ross Taylor and Napier caught and bowled, and he threatened to do that just then as well with a bit of extra loot. We only saw a little bit of spin from Todd Astle. He came in bowling against 9, 10, 11. Not going to get a measure really. Well, this is what Ian Smith was talking about. Napier, that one there, just holding up flight, slower ball, pushing the hands at it. It's a little area of concern because there are runs available down the ground. Might have long off, long on are there. So the single is there if you're confident playing the drive. But if you're not confident about playing the drive, you're missing out. Ross Taylor and Napier used his feet, missed out. Here he's sort of staying at home at the moment. It sort of sense he would like to cash in on those areas, but can't quite do it. Rather collect square than straight. 55, 56 in fact for 2. आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी, तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसकी इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। In New Zealand, it's been, I suppose, an instant success if you look at the scores, but how much have they learnt? Love the shot from
Taylor, when he plays it, he's so quick to pick up the length and he's got fast hands as he comes. The ball comes round on it. Bang! Keeps the ball on the deck. Hoping MS Stoney might pass the fitness test for Wellington. We'd love to have another look at him. Stoney, I'm not sure if there's been any word on his progress. But there seems to be no apparent injury. He seems to be all right. Maybe they just give him a little bit of a breather. But I'm pretty certain with what happened today, with the Indians collapsing for just 92, they would want Dhoni's experience to come in to the next game. Push for two, Henry Nicholls. He's a really good judge of a run. It's the longest part of the boundary as well, 72 meters. So if the ball goes a little away from the fielder there in the deep, there's always a chance of a second. Always good in the slow-mo replay, seeing the transfer of the weight from the front foot to the back. And the balance, the body balance and the head position. Superstars, of course, of world cricket. Lucky to have him around. Glorious shot that. Even MS Stoney might admire that one. Lovely shot. This is such a good pitch to play the drive once you're set. Once you know the ball's not going to swing, get through the gap. He's taken his front foot so positively towards the ball. Very nice shot. And the left-hander's elegance as well. When the left-handers play the cover drive, it seems a completely different world, isn't it? Doesn't the tape that he's got around the middle of his bat, it's almost like the ball was attracted to a little strike there and he fair middled it. Twelve overs gone, and it is 64 for 2. फ्लू टाइम पे नो स्टोरी टाइम छूना मत फ्लू हो जाएगा ये शील्ड मुझे फ्लू जर्म से बचाएगा फ्लू जर्म्स छूने से भी फैलते हैं। नया लाइफ बॉय सिल्वर शील्ड फॉर्मूला दे बीमारी वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। यहाँ तो हर तरफ जॉन डियर ही नजर आ रहा है। पर पार्ट्स? वैसे तो जॉन डियर के पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकई चिंता मुक्त। जॉन डियर, सुविधा हर कदम, दाम फिर भी कम। पीको टर्मरिक इन ऑयल बेस विद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, सूखी त्वचा का पोषण कर। इस वक्त ये कारवां निकल चुका है। Rugby sevens were just to 500 yards down the road over the weekend, and now international cricket. Big slip and a slip for Chahal. It's to add to that international sport White Ferns tomorrow. I was getting onto that, Leslie. Oh, they'll be in the cool of their motels or hotel rooms, I would imagine, plotting, planning. They can see how quickly things can change if you get it right. In the year there for Nicholls and Chahal not able to pick it up or latch onto it. Turn was fast, and if he'd maybe been a couple of inches taller, Chahal, he's a whiffet. He usually, off his own bowling particularly, is very, very good.
Couldn't get that one. I know both teams, both the Indian women and the New Zealand women, trained this morning. Indian women in first at 9 o'clock, working very hard, and then the New Zealanders coming in at 11, the heat of the day. The Indian women have also dominated the one-day series so far. That they have been very comprehensive. It's been a delight to watch them. Mandana has been absolutely terrific. Again, a left-hander. Every time she played the cover drive, I was thinking, oh, that is Saurav Ganguly. There's so much like Saurav Ganguly or even a David Gawa. Cover drives, superb stuff. Just before we finish on the women's game, Smriti Mandana with her 100 in the first ODI, then her 90 not out. All looked better than a runner ball as well, but the second innings, the second ODI particularly, hardly any ball in the air. It was all along the ground. It was super to watch. Yes, and the skipper also contributing with the bat. It's a heave. Not a good one either. A couple of momentous days really for Indian cricket as we see that Taylor swipe round on the leg side. Of course today Rohit Sharma, his 200th match. Tomorrow Mitali Raj plays her 200th ODI for India. Oh, he got that one. He waited just a little bit longer, Ross Taylor. Well, that's the area he was targeting, wasn't he? Even the previous shot, there is no deep mid-wicket there, so he thinks that that's a pretty safe shot. That's also, of course, a shorter boundary. It's only 58 meters. This time he's connected sweetly. Nobody in the crowd has taken it as well. Back to back. I'd say either of them were perfectly timed, but they got the maximum result. 79 for 2. एक पार्ले मैजिक्स लेना। ये मैजिक्स नहीं है। ये भी बढ़िया है। बच्चों को परेशान करना गलत बात है। चॉकलेट, ऑरेंज, लाइची, लेमन, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, इतने सारे फ्लेवर्स है कहीं और? नहीं। टेस्ट के साथ गद्दारी अच्छी बात नहीं। सॉरी, अब से सिर्फ पार्ले मैजिक्स। बच्चे को पता है क्रीम बिस्किट का सुपर हीरो सिर्फ पार्ले मैजिक्स। गोदरेज प्रोटेक्ट मिस्टर मैजिक हैंड वॉश। पहले पानी, फिर पाउडर, शेक करो, हैंड वॉश तैयार। इसमें है नीम और एलोवेरा। गोदरेज प्रोटेक्ट मिस्टर मैजिक हैंड वॉश। सिर्फ 15 रुपए का रिफिल बनाए पूरी बॉटल। जॉन्स का डर चुमंदर। यहाँ तो हर तरफ जॉन डियर ही नजर आ रहा है। पर पार्ट्स? वैसे तो जॉन डियर के पार्ट्स बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाकई चिंता मुक्त। जॉन डियर, सुविधा हर कदम। दाम फिर भी कम। In your career, I think you're doing outstandingly well. So, he's top drawer. We know how good Mohammad Shami is at the top with the new ball, but really it's been Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal who have caused all sorts of problems for the New Zealand middle order. Not just the flight, it's not the pace. Food for thought though, and we have talked about it already with Henry Nichols opening the batting and chasing the 93, which scoreboard pressure not. Now that he is facing spin, it is one of his strengths as well.
It is a genuine option. A lot of talk about Colin Munro's form or lack of. Technically, it was a viable option. Or maybe another promotion at another time. Ross Taylor is less likely to take Yaraf on over mid-wicket. They've put men way back, but that's the longer boundary he's heading to as well. He has to get it exactly right. $12 to win, 81 for 2. बाकी सब तो उड़ गया, लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। बिना गैस वाला फॉग ये जल्दी से उड़ेगा नहीं, रहेगा। मेहनत ज्यादा, मैल और बदबू भी, लेकिन तनख्वाह। इतनी महंगाई में आदमी अकेले घर कैसे चलाए? अकेले? दोनों हाथों से आसान होगा ना? वैसे ही दोनों कमाएंगे तो घर चलाना भी आसान होगा ना। मैं काम शुरू करूं यूनिफॉर्म सिलाई का, व्हील 2 in 1, कपड़े फ्रेश, सोच भी। मेरे देश की धरती संग बीकेटी, उगले हीरे मोती। बीकेटी टायर देश की धरती से जुड़ा। Oh, good bit of fielding. That was a boundary all the way. It's good to try to keep your standards up in these situations. If you're having misfields when you've been rolled for not many, it just adds to a poor look for the day. He's done a good job, hasn't he, Nichols? He's opened the batting here. First time won internationals, but it hasn't been a demanding ask for him. 30 from 42. I suppose you have to say, tick in the box. Job well done, I think. Sometimes these small totals can be nasty, horrible little ones to chase. Not if you chase them like that. He wants to finish it in a hurry here, Ross Taylor, doesn't he? I'm not sure he knows there's an extra 15-minute allowance, Smithy, to finish the game. I wouldn't bet my bottom dollar that he does actually, Dooley, to be fair. We've had confirmation that if a result is possible, 15 minutes extra can be taken, so common sense has prevailed. Do you reckon you take the initiative with the umpire and say, hey, you can get some extra time here, mate? Well, that could be it. If that runs away to the boundary, New Zealand will have won, and they've won it so easily. After the first 3 games, you would have thought, did they have a performance of this kind of dominance within them? Well, they have, and they've done it exactly the right way. Yeah, what a turnaround. Probably no one saw. गोदरेज प्रोटेक्ट मिस्टर मैजिक हैंड वॉश। पहले पानी, फिर पाउडर, शेक करो, हैंड वॉश तैयार। इसमें है नीम और एलोवेरा। गोदरेज प्रोटेक्ट।